Mohammad Wasim, student of MCS Ghazi University. Dear student and respected dear sir, Assalamu alaikum. Today my topic is stakeholder equity. What is stakeholder equity? The corporation form of organization, the equity section. For corporation have a section 2 in stake equity. Capital stake, stock and returns earning which represent the net income the net income in the corporation and not paid out the stakeholder in the form of divides the account dividends that are amount paid out the stakeholder as a normal debit balance and honor equity. A stockholder equity made up of capital stock and retained earning have normal credit balance. A corporation is an equity created by law that is separate and distinct from its owner. कैपिटल स्टेक होल्डर, जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर अकाउंट है, मतलब है कि हमारे जो स्टॉक होते हैं, कैपिटल स्टॉक उसे कहते हैं, जो मतलब हमारी अर्निंग मौजूद होती है। उसके बाद रिटेन अर्निंग, जो हम मतलब है रिटेन, हमें जो अर्निंग बचती है उसे रिटेन अर्निंग कहा जाता है। उसके बाद है टू कॉमन बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेशन। इसकी दो बेसिक कॉमन जो क्लासिफिकेशन है वो बाय ओनरशिप है। नंबर एक पर जो है बाय ओनरशिप, बाय पर्पस। A corporation purpose may be to earn a profit of it, may be organization as non-profit. Number second, classification by honor distinguishes between publicly held corporation and privately held corporation. Public held corporation may have thousands of stakeholders and its stock is regularly traded on a national securities exchange. B. Privately held corporation, often referred to as closely held corporation, usually have only a few stakeholders and does not offer its stock for sale to the general public. जो पब्लिकली हेल्ड कॉरपोरेशन है वो बहुत ज्यादा होती है, उनके स्टेक होल्डर भी होते हैं और उनकी सिक्योरिटीज एक्सचेंजिंग होती है वो नेशनल लेवल के ऊपर होती है। जबकि जो प्राइवेटली कॉरपोरेशन होती है वो कुछ नंबर्स होते हैं उनके, ठीक है, और वो अपने मतलब है कि सेल्स जो होती है जनरल पब्लिक को। उसके बाद कैरेक्टर सर्च ऑफ कॉरपोरेशन है। The corporation has separate legal extent from its owner. The stakeholder have limited ability, इसकी liability जो होती है वो limited होती है। Owner is held in share of capital stock which are transferable unit. The corporation has the ability to acquire capital through the issuance of stock. Common have a continuous life. The corporation management as at the discretion of the board of director who are elected by the stakeholder. The corporation is subject to numerous government regulation. The corporation must pay an income tax on its earning, and the stakeholders are required to pay taxes on the dividends to the revise. The result is double taxation. Advantages and disadvantages of corporation. Advantages, सेपरेट लीगल एक्सटेंस हैं, वो थोड़े लीगल होते हैं लेकिन वो मुख्तलिफ होते हैं। लिमिटेड लेबिलिटी ऑफ स्टेक होल्डर, लेबिलिटी जो होती है लिमिटाइज होती है स्टेक होल्डर के अंदर। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स, ओनरशिप के कुछ अपने राइट्स होते हैं, मतलब है ट्रांसफरेबल के हवाले से। एबिलिटी एक्योर कैपिटल, continuous life, corporation management, professional managers. Disadvantages:
Corporation management, separation of ownership and management, government regulation. इसके अंदर टैक्सेस भी होते हैं जो इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। कभी कभार इसके अंदर डबल टैक्सेस भी लगा दिए जाते हैं। Ownership right of stakeholder. Each share common stakeholder give the stakeholder the following ownership rights. Vote in a, vote in the election of board of director and in action that required stakeholder approach. वोट किए जाते हैं और उसके बाद जो है ना तो बोर्ड का डायरेक्टर जो होता है वो स्टेक होल्डर की कुछ अप्रोच होते हैं। शेयर इन corporate earning through the recipient of dividend, maintain the same percentage ownership when additional share of common stock are issued. Share in assets upon union liquidation. What is stakeholder equity? Stakeholder की equity क्या होती है? Stakeholder equity जो होती है amount of the asset remaining in business after all liabilities have been settled. It is collected as the capital given to a business by its generated by the operation of the business, less any dividend issued. On the balance sheet, stakeholder equity is calculated as total assets, total liability stake equal to stakeholder equity. जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं उनको उनमें से मैनेज कर दिया जाता है एबिलिटीज लाइबिलिटीज और जो मतलब है ये दोनों का मैनेज जो मतलब हमारे पास मौजूद होगा उसके वो इक्वल होगा स्टेक होल्डर इक्विटी के। एन अल्टरनेट कैलकुलेटर ऑफ स्टेक होल्डर इक्विटी शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग ट्रेजरी स्टॉक स्टेक होल्डर इक्विटी जो हमारे शेयर होते हैं कैपिटल और उनको मतलब उनके अंदर हम अपने जो बची हुई अर्निंग होती है उसे प्लस कर देते हैं और फिर इसके अंदर से मैनेज करते हैं ट्रेजरी स्टॉक्स तो वो इक्वल होना चाहिए स्टेक होल्डर के। इसे स्टेक होल्डर इक्विटी कहते हैं। स्टेक होल्डर इक्विटी both calculation result in a same amount of stakeholder equity. This amount appears in the balance sheet as well as the statement of stakeholder equity. The stakeholder equity concept is important for judging the amount of fund retained within a business. A negative stakeholder equity balance essentially when combined with a large debit liability is a strong indicator of appending bankruptcy. A number of accounts comprise stakeholder equity, which typically include the following: common stock. Common stock. This is the per value of common stock, which is usually $1 or less per share. In same state, per value may not be required at all. Additional paid in capital. This is the additional amount that shareholder paid for their share in excess of per value. The the balance in this amount usually substantially exceeds the amount in the common stock account. Thank you for listening me.